Hello, fellows. Today we are really excited that we have a special guest, Muhammad Farhan Qazi. And Muhammad Farhan Qazi is a globally recognized and certified SHRM, SCP USA, and PHRI and SPHRI and certified KPI professional and practitioner from KPI Institute of Melbourne, Australia. और 15 प्लस इयर्स के एक्सपीरियंस में फरहान ने ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग, चेंज मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बहुत सिग्निफिकेंटली काम किया है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कि केपीआई बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन को, टीम्स को और मैनेजरियल प्रोडक्टिविटी से क्या फायदे मिल सकते हैं। जी फरहान, वेलकम। Thank you very much, Umar. Thank you for the invitation, and I'm very much excited to share a public workshop which is going to be held in January. And today we are going to introduce about that workshop, which is KPI based performance management. As you have already shared my introduction, 15 years of my experience is with the organizations, and I'm working closely with line managers, HODs, C-level staff. And in last 5 years, I'm working as a consultant, coach, and a trainer. And in that period of time, what I found out that the main job and the core job of a manager or a HOD or a line manager is to get things done. um, मसला क्या होता है इसमें? The problem is कि sometimes we are too much into subjective discussions, and there the terminology was coined, that is KPI and key performance indicators. But most of the time, we are unable to understand how these KPIs can be integrated with our performance management and our day-to-day performance. So this workshop is all about helping line managers, giving them a new perspective based on my research experience. And I was also a practitioner in the past, so I know the pain points when you're managing teams, when you're talking about KPIs, when you're talking about achieving those KPIs. Um, we are by nowadays we are like, it's end of the year 2023. Every organization is going towards 2024 appraisals and performance management. What will be the objectives? So I think it's a very good time and the right time that we can share some good practices, some fresh perspective with reference to key performance indicators. हाँ, तो जैसे फरहान, आपकी तो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्टीज हैं इन टर्म्स ऑफ दिस केपीआई, और आपने बड़ी प्यारी बात की कि केपीआई को कैसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपने फ्रेश पर्सपेक्टिव की बात की, और फ्रेश पर्सपेक्टिव में थोड़ा ऐड कीजिएगा कि ग्लोबली क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देखते हैं इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया, कि कैसे जो है वो केपीआईज आउटस्टैंडिंग बनाए जाते हैं और कैसे फिर उनकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करके राइटली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। So, well, what I would like to share here, because this is a limited podcast, we are doing it like kind of an introduction. But what I want to share is the concept of meaningful KPIs. Um, we have a list of KPIs as a manager. For example, if you are in a sales, you are national sales head, and you have a team across the board working in different regions. So you have a list of KPIs which you have to achieve, and every next person in your team are try to achieve that thing. But what I believe that in the start of the year, you have to discuss with your team about meaningful KPIs. So what are the meaningful KPIs? That is something which are going to create a impact on your overall results and goals. Uh, why it is happening? होता क्या है कि हम over the years KPIs के ऊपर काम कर करके उनको अचीव कर करके बहुत सारे KPIs redundant हो जाते हैं, जिसको डिस्कार्ड करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि नए चैलेंजेस के लिहाज से रेलिवेंट नहीं रहते. Unfortunately, you can say that we only look into the just carry forward the last year KPIs, and we don't see the framework of it. We don't talk about which KPIs are more important for the outcome,
which KPIs are more important for customer delight, which KPIs are more critical for cost reduction, let's say. So even if you are in a sales, you can reduce a cost by optimizing certain KPIs, by adapting some new technologies, by going for e-commerce or e-business. So what I will be facilitated, inshallah, to the participant is the key concepts of meaningful KPIs, which help them to create a winning combination for their organizations and for their people, and it would be helpful for them to manage the performance management as well, because by end of the day, organizations and for the people, what matter is the performance. And most of the time in performance, we say that organizations and people are looking for a success. For me, result is all about, not only about the success, but it's about success and continuous learning. So I'm going to share in that workshop, which will be held in January 23, 24 in Karachi, Pakistan, about the concept of that meaningful KPIs. और फरहान, आपने जो स्पेसिफिक ऑडियंस का भी जो इंतखाब किया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइन मैनेजर्स के ऑस्पेक्ट पे डेफिनेटली इस ऑस्पेक्ट पे काफ़ी क्लैरिटी भी रिक्वायर होती है, और उधर से ही जो परफॉर्मेंस इंटैक्ट होती है वही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी ऐड कर रहा होता है। तो True. इस मामले में थोड़ा शेयर कीजिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है केपीआई मैनेजमेंट का, रिसर्च क्या कहती है कि अगर केपीआई इफेक्टिव हो तो उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है किसी भी टीम के एस्पेक्ट पे और फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी के एस्पेक्ट पे। Which is a very good question, Umar. You asked me why this program is for the line managers, because performance is with the line managers, and all the organization have the good HR people, and they already have policy procedures, KPI list of KPIs. But this program focused is not about only designing the KPIs or designing the SOPs, but helping the line manager to live those KPIs, to integrate with the performance management. मैंने over the years क्या देखा है कि एक सिस्टम एचआर में चल रहा होता है कि जी हमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को रन करना है, हमें केपीएस चाहिए, और एक सिस्टम लाइन मैनेजर्स के पास चल रहा होता है जो डे टू डे के ऊपर टारगेट्स अचीव कर रहे होते हैं, सेल्स में, चाहे ऑपरेशंस में या फैक्ट्री में या फाइनेंस के अंदर है। ये दो अलग सिस्टम नहीं है. As an organization, there is a one system, and this is very important to understand, and this is why that is why our focus is to working with line managers and help them to understand. And obviously HR people and HR professionals, senior professionals, they are also welcome in this workshop, because they can understand how to work closely with the line managers, because you can't work in isolation when you're talking about KPI. Secondly, which you asked me about the effective management and effective KPI management. See, होता क्या है, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में which is कुछ चीज़ें जो है ना वो विदाउट एनी एफर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हो जाती है. राइट। क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए, क्लैरिटी ना होने के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप ज़्यादा कम्युनिकेट ना करें चीज़ें, क्लैरिटी खुद ही नहीं रहती लोगों के बीच में. So effective management would help, effective KPIs management and right mindset towards meaningful KPIs can help between the teams and between the line managers and the staff, is to build first thing first. It's a communication, the expectation from your team and the expectation of your organization about uh, performance. So KPI effective होंगे तो expectation की communication clear सही हो जाएगी. Secondly, clarity. What is expected from my role as a line manager. आप अपने line manager से यही expect करते हैं कि जी मैं कौन से KPIs पे काम करूं, और line manager भी यही सोच रहा होता है कि organization में मैंने कौन से KPIs को ज़्यादा काम करना है. अगर आप और आपका line manager और आपका staff एक ही KPI पे काम कर रहे हैं, तो sorry to say that there is some overlapping and some duplication of work. वी हैव टू बी क्लियर कि जी मेरे टीम ने किस चीज़ों पे काम करना है, मैंने किन पे काम करना है, एंड मिल के हमने कौन से इफेक्टिव केपीआईज पे काम करना है.
So first thing is communication, second is clarity, and the most important thing, if you ask me, is the confidence. The last thing, when Hmm. you have clear communication, when you have clarity, what are expected from you as in a performance, then you have a confidence to achieve that thing. Hmm. So our framework is about these three C's. We are going to talk about these three C's, that how communication, clarity, and confidence help a line manager in a when they are setting up the effective KPIs within the team. Brilliant. So the three C's, so communication, clarity, and then the last one is the confidence. कि अगर ये तीनों एस्पेक्ट को आप कवर करेंगे तो इफेक्टिव केपीआई की मैनेजमेंट होती है। तो फरहान आपका तो क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग और इसके बाद स्ट्रेटेजिक एचआर, फिर डिवाइजिंग दी सर्टेन स्ट्रेटजीज व्हिच आर अलाइन विद दी राइट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोचेस, तो आपकी आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे जब फ्रेमवर्क को राइट कर दिया जाता है इन थ्री सीज के मुताबिक, तो उसमें आप आपके सक्सेस रेट क्या होता है आपने जो अभी तक काम किया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ? Uh, Based on my experience, it is a pretty diverse experience because मैं खुद पहले industry में रहा हूँ as a line manager रहा हूँ मैं working closely with the largest companies of Pakistan like TCS, Muller and Phipps, Standard Chartered Bank, Dollar Industries. Then from last 5 years, I'm working with some largest organization as a consultant, as a coach and trainer. और KPIs के ऊपर I work with the textile industry, banking industry, technology industry. सक्सेस का ताल्लुक प्रोसेस से है। सी अनफॉर्चुनेटली हम केपीआईज को समझते हैं कि केपीआई या केपीआईज को रिव्यू करना इज लाइक अ इवेंट। नो, इट्स नॉट एन इवेंट। You live performance and KPIs every day. So what I believe and what management and modern management say that you have to stick to the best process. You have to improve your process continuously basis. If you stick to the process and your process is aligned with the modern technology or contemporary management, then success will be guaranteed, inshallah. And based on my experience with all various organizations, I found out that it's more about not only about the success but the performance management and the performance mindset will be improved between line managers and between their teams. सी जब क्लैरिटी आती है, कम्युनिकेशन क्लियर होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है वो फोकस पे आता है। सो फोकस किस साइड पे होना चाहिए? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जी मेरी टीम अलाइन नहीं है। बहुत सारे मैं एच को और सी लेवल के ऊपर जब मेरी डिस्कशन होती है, सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच आई फाउंड आउट दैट देर इज अ लैक ऑफ अलाइनमेंट। सो जब कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और क्लैरिटी बिल्ड होगी तो फोकस बिल्ड होगा। So ultimately, this KPI technical discussion of KPI help you to build a focus. When you build a focus, the results will be guaranteed. And as I said, results could be a success and could be a failure, but don't worry about it. Through the failure, you also learn that where we went wrong. If there is a right process, you can find out where we went wrong, and you can redo it very fast. So based on Yeah. my experience with various organizations, those who have a good KPI management and systems, those who work on meaningful KPIs, their success ratio is very high. Globally, there's a number of studies I have gone through with this HRM US certified KPI. This KPI Institute of Melbourne is a performance management consultant. I read a lot of reports of there. They also said that the ratio of success will be very high when you adopt these kind of frameworks. राइट। तो फरहान आपका एक्सपीरियंस भी इस चीज को बिल्कुल रिलेट कर रहा है और डेफिनेटली आपकी क्वालिफिकेशंस तो इस एस्पेक्ट पे है, एंड आई एम क्वाइट ऑनर्ड कि काफी क्लोजली आपके साथ जो है वो इंटरेक्शंस का मौका भी मिलता रहता है, आपके वर्क को भी हम एक्सपोजर करते रहते हैं। तो नो डाउट अबाउट दैट द इम्पैक्ट दैट यू आर क्रिएटिंग कि जो केपीआईस के एस्पेक्ट पे जो आप अलाइन कर रहे हैं विद द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इट इज रियली इंस्पायरिंग। और जो स्पेसिफिकली जैसे आपने खुद भी बताया कि एचआर के लोगों के लिए तो केपीआईस की बात काफी फ्रीक्वेंटली हो रही होती है, लेकिन क्योंकि लाइन मैनेजर्स का जो नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशंस में और उनका जो इम्पैक्ट होता है वो क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि लाइन मैनेजर्स की ही परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होता है, तो उनका नंबर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
मैटर कर रहा होता है। तो आपने इसलिए जो ये अपनी वर्कशॉप 23 और 24 ऑफ जनवरी को कराची में इंशाल्लाह जो आप कर रहे हैं, सो उसके लिए ये राइट टारगेट ऑडियंस है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि ईयर का आगाज भी है और उसमें गोल सेटिंग पे बहुत ज्यादा बात हो रही होगी, और उसके साथ साथ केपीआईस जब तक गोल के साथ राइटली इंटीग्रेट नहीं होंगे तो कभी भी आपका राइट फोकस नहीं आ सकेगा। सो वी लुक फॉरवर्ड के ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने इस सारे प्रोसेस को रीथिंक करके और उसको फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ अलाइन करना चाहती हैं, सो वी आर लकी दैट फरहान इज गोइंग टू कंडक्ट 23 एंड 24 ऑफ जनवरी को जो वर्कशॉप होने जा रही है केपीआई बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, उसमें आप नॉमिनेशंस भेज सकते हैं। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू फरहान इंशाल्लाह फॉर योर वेरी इंपैक्टफुल training session ahead in Karachi, inshallah. Yeah, thank you very much, and I highly recommend all the organizations who are really want to not only rethink, but those who want to reinvent their KPI and performance management, and they really want to enjoy that system. That system's supposed to be enjoyed rather than stressed out. So for that, you should have a new contemporary concepts, and I'm looking forward to facilitate and giving my best to the participants. And thank you very much, Umar, once again for inviting me and having this conversation. It's honor, and thank you very much for sharing your perspectives. And have a great evening. Thank you. Thank you.